Voting began for Chhattisgarh urban body election on Tuesday morning. The polling for 10 municipal corporations, 49 municipal councils and 114 Nagar Panchayats across the state began at 8 a.m. local time. It will continue till 5 p.m. with the counting of votes set to be done on February 15th. There are a total of 44.74 lakh voters, among which 22.52 lakh are male voters while 22.73 lakh are female voters. The Election Commission has set a total of 597 polling stations across the state for urban body polling. In January, the Chhattisgarh Election Commission announced that the state will hold urban local body elections on February 11, with results to be declared on February 15th. The Tri-Tyre Panchayat election will take place in 3 phases on February 17th, 20 and 23, with results to be announced on February 18th, 21 and 24. Earlier on February 6, Chhattisgarh Chief Minister Vishnudev Sai attended the Vijay Sankalp rally in Korba as part of BJP's campaign for the urban local body elections 2025. He also took part in a roadshow in Raigarh showcasing BJP's support base in the region. Sai's presence was a key moment in the party's push to solidify its position ahead of the municipal elections. He encouraged citizens to trust the BJP with further development and governance. In a state from Raipur, CM Sai elaborated on BJP's strategy for the urban body elections. Meanwhile, Chhattisgarh Deputy CM Arun Sao casted his vote at a polling booth in Raipur and urged the citizens to come out of their houses and cast their votes. This is the festival of democracy and requested everyone to participate in it. He also expressed confidence that the BJP will win all the seats in the state. निश्चित रूप से मैंने सब परिवार यहाँ पर आकर मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है। आप सभी से भी आग्रह करता हूँ कि अपने घरों से निकलें, मतदान केंद्र में आए और मताधिकार जरूर करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपनी आहुति दे। सुंदर शहर के निर्माण के लिए, विकसित शहर के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करें, कमल का बटन दबाएं, सुंदर और विकसित शहर पाएं। कितनी सीटें आ रही हैं? सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अटल जी के विश्वास पत्र क्या है? अटल विश्वास पत्र शहरों के समग्र विकास का रोड मैप है। इसमें युवाओं के लिए प्रावधान है, महिलाओं के लिए प्रावधान है, गरीबों के लिए प्रावधान है और एक समग्र रोड मैप शहर के विकास का हमने बनाई है। जनता उस पर भरोसा करेगी और कमल का बटन दबाएगी। महिलाओं का कितना